Hello, Mandeep. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, So this so time you I are just want to strength of materials. for what examination? Sir, I'm going for sir MS in mechanical design at IIT Mandi. At IIT Mandi. Okay. So, first of all, just define me what do you mean by neutral axis? Neutral axis. So neutral axis is in a term used in bending stresses. It is for where neutral layer meets the cross section of the material, that is called the neutral axis. For isotropic If I'm just materials, it passes Mhm. through the centroid of the cross section. Okay, if I'm just asking about if a material is subjected to, if a member is subjected to some load, just like a movement subjected to movement. So how the stressor came on the neutral axis? Can you repeat the question, sir? If there is some stress are acting on the member, if some movement are Mm. acting on the member, so how the Mhm. stressor came on the neutral axis? Okay, so the stresses are in the uh, bending bending stress, sir. Tension and compression, sir. I mean, like, top layer is in the, sir, uh, tension, and bottom layer is in the beam is subjected to, So sir, so how much hobby. stressor came to be a neutral fiber? Neutral fiber, sir, it is in zero. Neutral layer पे सर जीरो होती है स्ट्रेस. न्यूट्रल लेयर पे जीरो मतलब होती है क्या? मीन सर बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और ऑल स्ट्रेसेस? बेंडिंग स्ट्रेस. ओके. इफ अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोडिंग, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक मेरा जो मेंबर है उसके फ्री क्रॉस सेक्शन पे हमारा क्या हो रहा है कि इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोडिंग लगी हुई है. कौन सी? इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोडिंग. तो पहली बात तो स्ट्रेस कौन कौन से आएंगे पहले मुझे ये बताओ. बेटा आप अपना कैमरा स्विच ऑफ कर लो, मे बी शायद आवाज क्लियर आ जाए. मैं भी ऊपर से साउंड प्रो. आवाज सही आ रही है आपको? हेलो हेलो मनदीप. हेलो मनदीप, आवाज आ रही है आपको? यस. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर. हाँ तो बेटा क्वेश्चन का जवाब देंगे. सर क्वेश्चन समझ में आ क्वेश्चन गया? सर. हाँ हाँ दोबारा. हाँ, क्वेश्चन बोलता हूँ कि कोई मेंबर है मेरा, उसके ऊपर मेरा मतलब एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, जस्ट लाइक दिस, ये मेरा मेंबर है. इस पे मेरा एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोडिंग लग रही है, यानी यहाँ फिक्स है और यहाँ पे लग रही है एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोडिंग जस्ट इन दिस डायरेक्शन. सो हाउ मेनी स्ट्रेसेस आर केम इनटू द फाइबर? सर देयर विल बी सर बेंडिंग स्ट्रेसेस and sir tensile stress. Bending stress and sir compressive stress. Bending The load stress is and acting. compressive. Yes. Okay. The So load if is I'm acting, just sir, into the beam, the tensile, sir. okay. So if I'm talking about the in the case this, ki how much stress are at the neutral fiber? There will be, sir,
sir, the load upon area, sir, which is the load which is acting upon area upon compressive stress, sir. Bending stress will be 0, and the only, sir, compressive stress will be acting on the neutral layer. Okay. So can you just explain me what do you mean by fatigue load? Peak load is, sir, fluctuating loading. Yes, sir. The Only that? load is a load varies with time. It fluctuates with time. If I'm going to want to train any member which is under fluctuating loading, so how can we design? Can you just tell me? What are the procedure? Sir, there is a completely used completely reverse stress condition which is used for, sir, like endurance strength is the condition, sir, which is if the maximum completely reversed stress for the number of evolutions it can sustain for the maximum completely reversed stress 10⁻⁶ साइकिल्स तक, सर, वो उस स्ट्रेस को, सर, सस्टेन कर सकता है. तो we can say that it has infinite life. It's for a completely reverse stress. You are having to listen By about this we can the design. Soderbergh line or Goodman line. Yes, that also, sir. Soderbergh, Goodman, and, sir, Gerber's parabola. Modified Goodman. But what is the difference between Soderbergh and Goodman? In which cases we are just using these? Sir, Soderbergh is used for, sir, ductile materials, and, sir, the Goodman is used for, sir, brittle materials. The Soderbergh is more conservative. Sir, Goodman is less conservative than Soderbergh. Okay, what do you mean by theory of failure? So theory of failures are used to design the members materials for failures against the failures. Yes, sir. Like against the yield descent, plastic So, deformation. can you just tell me which theory of failure is best for the brittle material and which is best for the ductile material? Brittle material, sir, for brittle materials, maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. And, sir, for ductile materials, maximum shear stress theory, sorry, maximum normal stress theory. Sir, for brittle materials, and for, sir, ductile materials, maximum shear stress theory and maximum uh, strain energy theory. No, sorry, distortion energy. Distortion energy. Maximum. So why we use the maximum principal stress theory for the ductile metal? बट आपकी आवाज नहीं आ रही. Hello. Hello. So can you repeat the question, sir? Why we use the maximum principal stress theory, the maximum normal stress theory for the ductile material? No, sir. Maximum normal stress theory. No, for ductile, sir. It is used for, sir, maximum Brittle shear metal. stress theory. Yes, sir. For the brittle metal, why we use the for brittle metal? Sir, because they are weak in, sir, tension, brittle materials. Tension. The weak in So tension. if I'm just going to find out a dimension by using a different theory of failure for a ductile material, just like a maximum shear stress theory, maximum distortionary theory, or a gas and Trussell theory, so which will give the best result? So best result will be given by, sir, maximum shear stress theory. Sir, it is more conservative. Yes. Okay. So Amandeep, I will just give you the feedback. Today you are just give the answer more than 50 to 60% answer you are correct. There is no issue, but a little bit you require some revision also. Yeah? Yes. Once you just going to revise, then you have a confidence. And I think why are you delivering in a very low confidence?
whatever you are just going to be speaking, Hmm. delivering me, just it has a very low confidence. Why? Have you any fear? Sir, like, sir, I'm not given, sir, the interviews for the much interviews. So, sir, that's why, sir. इट्स नॉट अ इशू। जब भी आप कभी कहीं आंसर देते हो तो जो आपको अच्छे से आता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ट्राई टू Yes. स्पीक इन अ गुड वे और विद कॉन्फिडेंस, Okay. है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई सामने जो बैठा है ना वो भी सिंपल ही है ना, चाहे वो Yes. आईआईटी का प्रोफेसर हो चाहे कुछ भी हो, दे ऑलवेज वांट टू जस्ट नो अबाउट योर नॉलेज, हाउ मच स्किल्स यू हैव, है ना, हाउ मच Yes. नॉलेज यू हैव। सो Okay. ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है? Hmm. कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जब आपको चीजें एकदम क्लियर होती है। Yes. जैसे जहां आपको डाउट होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने Hmm. आप डाउन जाता जाएगा, Hmm. और जहां उस पर एक के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है तो इंसान और डर जाता है। और Yes. कॉन्फिडेंस अब कैसे रहता है कि जैसे आपसे मैंने कुछ पूछा, आपने बताया, फिर उससे दूसरा मैंने क्वेश्चन जब राइज किया वो आपको और अच्छे से आता है या आता है, क्लियर है, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चन यू विल बी फील कॉन्फिडेंट। सो इसलिए थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे ना, तो देन यू विल बी Hmm. एबल टू गिव द आंसर क्विकली इन अ वेरी गुड मैनर। Okay, Okay. overall you are a good. There is no issue. You have a knowledge. But I think little bit you are just required a revision. Okay. सर मशीन डिजाइन के लिए सर, उसके लिए भी सर। मशीन डिजाइन का तो अभी जैसे थोड़ा बहुत तो मशीन डिजाइन का मैंने पूछा ही था, यस। बट एवर अब देख लीजिएगा यहाँ पे कौन मशीन डिजाइन करता है। इन केस कोई नहीं लेगा देन आई विल टेक। ओके सर। सर लाइक जैसे सर स्ट्रेंथ मटेरियल में सर लाइक जो टॉपिक जैसे सर गेट के सिलेबस का ये सारा मतलब लाइक सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लाइक ऐसा तो मोस्ट नहीं होता है कि इम्पोर्टेंटली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो देखो इंटरव्यू थोड़ा सा तो रैंडम होता है, बट स्टिल हम्म, दे आर जस्ट जजिंग फ्रॉम द बेसिक नॉलेज टू द हम्म, मतलब आपका हायर कितना अच्छा हम्म, नॉलेज है। जैसे बेसिक में जनरली बीम क्या है, कॉलम क्या है आपका, हम्म, स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर लोड का हम्म, डायरेक्शन तो कैसे स्ट्रेस आएगा, हम्म, वेरिएशन क्या रहता है ना, छोटी 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 हम्म, स्मॉल डेफिनेशन जस्ट लाइक कि फटीग क्या हो गया, रेजिलियंस क्या हो गया आपका, हम्म, मोटर साइकिल क्या होता है, क्यों यूज करते हम्म, हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर क्या हो गया हमारा, स्ट्रेसेस क्या क्या हो गए डिफरेंट टाइप के। तो बस यही सब जनरली इंटरव्यू पूछेगा आपसे। न्यूमेरिकल तो सॉल्व कराएगा नहीं वो, बट दे वो न्यूमेरिकल नहीं जस्ट वांट टू चेक सॉल्व। योर they would just want to check approach कि are you know about it or not. Okay, thank you so much. सर 3 सब्जेक्ट है सर लाइक मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ मटेरियल्स एंड मटेरियल साइंस, these 3 for design if I'm going for design. If you're going for the answers, first of all you just prepare the good about the machine design हम्म, and strength of material also, and you can just take the material science, yes, but ठीक। both of two are very important for you. हम्म, अगर डिजाइन रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो यहाँ से अच्छे से आना चाहिए। और टोम का yes, भी कुछ पार्ट ले सकते हो क्योंकि टोम में भी आपका गियर्स वगैरह रहता है सेम इन द हम्म, मशीन डिजाइन। ठीक है, ओके बेल्ट थैंक से क्वेश्चन पूछे हैं सर, बेल्ट एंड पुली से। यू। नहीं नहीं ऐसा कोई रेयर तो छोटा मोटा पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ड्राइव कौन सी होती है, नेगेटिव कौन सी होती है, मैक्सिमम कब होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, हम्म, किस केस में कौन सी लेगी। तो पूछने को तो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। आपका डिजाइन का ले रहा है, हो सकता है वो थर्मल पूछ ले तो क्या मना कर दो? नहीं कह सकते हो। हम्म, लेकिन ये है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।